Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? So की कॉन्सेप्ट से बात करते हैं. सबसे पहले गोल्जी apparatus का फंक्शन देखते हैं. Golgi apparatus has the function of storage, modification, and packaging of the materials इन वेसाइकल्स के अंदर. वेसाइकल्स क्या होते हैं? स्मॉल सेल्यूलर कंटेनर्स के अंदर. सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम. इफ देयर आर नो गोल्जी apparatus, देन पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग इसका फंक्शन है. अगर गोल्जी apparatus ही नहीं है देन पैकेजिंग ही नहीं होगा. पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल्स synthesized by the cells would be stocked. वहीं रह जाएगा. by the cells would be stocked. सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं अब. सी गोल्जी apparatus है ना, नए सेल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. गोल्जी apparatus also helps in the formation of new cells. Hence, in the absence of Golgi apparatus, new cells would not be formed. New cells would not form. So what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? So the final answer of this question is Golgi apparatus has the function of storage, modification and packaging of materials in vesicles. Option 1. If there are no Golgi apparatus, then packaging and dispatching of materials synthesized by the cells would be stopped. Second, Golgi apparatus also helps in the formation of new cells. Hence, in the absence of Golgi apparatus, new cells would not be formed. So, hope you understood it well. Best of luck.